city is a unit of governance, it is a unit of economy, it is a unit of life itself. India has 400 million people living in close to 5,000 cities. By 2050, it is estimated that India's cities will host more than 50% of India's total population. Several of 21st century's wicked global challenges, climate change, water and sanitation, gender equality, immigration, justice, you name it, have local implications. When people start living inside the city, you have to plan the city. You have to have climate resilience. You have to have human resource development inside the city. The primary person who will be behind all this is the corporator. So the Indian governance is organized as 3 tiers. The central government and then the state governments. Third tier of government is called the municipal governance or the civic governance. If you count all the elected representatives of India, there are hardly 543 MPs and 4,000 odd MLAs. And we have 86,000 councillors across all of these cities. So the ratio of citizens to elected representatives is very low in city governments. That's very important because that means the representatives can truly understand the citizens. So councillors therefore is the bridge between citizen and the government at the first mile. But however, what has been happening is that mayors and councillors who are the elected city leaders are highly disempowered. While 74th Constitution Amendment Act has constitutionally recognized city governments, it is not still recognized as a third tier of government because it comes under the state government. Different places they call it differently. Somewhere they say Nagar Sevak, somewhere they say Sabhasad, somewhere they say corporator, somewhere they say councillor. So in Dehradun, we are called as Parshad. We are directly connected with the people and we exactly know that what people want. I'm a corporate, I'm a municipal corporator. तो मेरा हर काम BMC से जुड़ा हुआ है. तो अगर BMC फास्ट है तो मेरा काम फास्ट है. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಿಂದಾನೆ. The level of responsibility they take is very high. The kind of roughy treatment they receive from the public is also very high. काउंसिलर का रोल ऐसा है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है, माने रोड, ड्रेन, उसका साथ में स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई और सीवरेज. आपका ये गली टूट गया है, आपको WC का इशू है या आपको जो भी दूसरा है. आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके, पासपोर्ट के लिए और एनी डॉक्यूमेंटेशन सिंस बर्थ टिल डेथ, एवरीबडी नीड्स अ काउंसलर इन हिज लाइफ. कॉर्पोरेटर्स के पब्लिक रोल कुछ अलग ही समझती है. उनकी बच्चे की शादी करा के दे दे, उनको घर बना के दे दे, स्कूल की फीस भर के दे दे, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाए. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದಿಗಳು ಏನಾನ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡೋರು ತಗೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಕೊಡಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಮದುವೆ ಐತಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಿಸೋದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಏರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಯಮುನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. कॉर्पोरेशन में लड़ो, हर जगह फाइट करो, फंड लाना, दिन भर ऑफिस में बैठना, पेपर साइन करना, लोगों से बात करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब. Water supply is not our thing. We don't collect any taxes. It is being managed by the water authority, but everything is done by us. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗೋದು. अगर एक काउंसिलर जीत के आएगा, जीत के आके उसको वोटर को भी सेटिस्फेक्शन करना है, पब्लिक को भी सेटिस्फेक्शन करना है और काम करके दिखाना है, तो हमको लिमिटेशन कहाँ है? तो आपको कैसे मालूम होगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. Is it true that the councillors are not well informed? Is it true that they're not trained? So we went around the country talking to councillors.
Anecdotally, we know that currently there is no systematic process in which a councillor gets inducted into her or his role. The attempt here was to basically see what is the need and what are the opportunities in systematically training councillors in building leadership with a focus on women councillors. So methodology basically involved a twin track approach, a policy research component and a primary research component. The policy research component, we looked at the landscape of laws, rules and policies. Second is about primary research, which has two subcomponents. One is the survey with the councillors, so for which we have actually travelled across the length and breadth of India, capturing the voices of 65 councillors, trying to bring in as much diverse voices as possible in terms of socioeconomic background, gender, experience in city politics, etc. So one thing we've noticed is that the councillors that come in are extremely good at understanding the political landscape. So a common refrain we got from it is, we know how to win elections, but we don't know how to govern. फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे कोई आज तक ना कोई सेमिनार हुआ था उस टाइप का, ना हमारी कोई ट्रेनिंग हुई थी, क्योंकि हमें पता हो कि हमारी व्हाट आर आवर पार्ट्स, व्हाट कैन वी डू, किस दायरे में रह के हम क्या काम कर सकते हैं. व्हाट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, व्हाट इज द फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैसे म्यूनिसिपलिटी चलता है, कैसे फंड आता है, कौन कौन सोर्स से फंड आता है, वो मालूम है नहीं बहुत को. हम जो बोल रहा है वो हम अध्ययन करके ये सब मिला है. फ्रैंकली बताओ तो मेरे हस्बैंड के थ्रू पता चला, बिकॉज वो एक कॉर्पोरेटर थे इतने टर्म से एंड उनको अच्छी खासी नॉलेज है और थोड़ा बहुत मैंने स्टडी भी किया, लेकिन हमको ऐसी कोई क्लासेस वगैरह नहीं मिली. अब देखो, हर कॉर्पोरेटर पढ़ा लिखा नहीं होता, आपको तो पता होगा ना, हर पॉलिटिशियंस आर नॉट एजुकेटेड, तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है. कॉर्पोरेटर को हर चीज़ की ज़रूरी है. बहुत गंभीर विषय है. हम इतने मेजर सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम सिटी गवर्नेंस में हैं और हमें ही अपने अधिकार नहीं पता है. Another aspect that leads to a weakening of the city government is the lack of devolution of powers according to the 74th Amendment. Unfortunately, this still hasn't been realized except for very few states where the state governments have devolved the functions. इंडिया का कम से कम बहुत स्टेट अभी लागू नहीं कर रहा है. अगर लागू करेगा तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका फंक्शन लेस हो जाएगा. अभी हमने तो मेरा साइड से 2010 से 74 अमेंडमेंट के लिए हम लड़ रहा हूँ. प्रॉब्लम ये आ रही है कि 74th अमेंडमेंट उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ है. 74th अमेंडमेंट अगर हो जाता है, उसके बाद जितने विभाग हैं, वेदर फ्रॉम द डेवलपमेंट अथॉरिटी टू PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट टू एनी अदर डिपार्टमेंट, इन सब का डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है विद द सिटी गवर्नमेंट. BWSS ಇರ್ಬೋದು, BBMP ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರೂ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. सब डिपार्टमेंट अलग अलग से काम कर रहा है, तो अलग अलग काम करने से कैसा डिफिकल्टी होता है वो सब तो काउंसिलर जो होता है उसको मालूम होता है. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು MLAಗಳು MP ಗಳು ಅವರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. The journey of a women city leader is not easy in India. A survey shows that men and women city leaders have different starting points in terms of education, workplace experience, and expectations of society. My husband was a corporator from last 4 terms. Then ladies ward हो गया, तो महिला वार्ड होने की वजह से my husband felt कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं होगा, कि मुझ में वो जज्बा था काम करने का. एंड देन आई बिकेम अ कॉर्पोरेटर. तो सबके माइंड सेट में था कि अरे एक हाउस वाइफ है, मौसी नज़र को अपनी सीट बचाना था, तो उसने अपनी बीवी को खड़ा कर दिया.
बट ही विल नॉट कम विथ मी इन द कॉर्पोरेशन. मुझे समझना बहुत ज़रूरी था. मैंने पहला समझा तो इन द स्टार्टिंग मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए था. दे सु कॉल मी अरे बिचारी को क्या आता है. बट अब किसी की हिम्मत नहीं होती बिचारी बोलने के लिए, बिकॉज मैंने अपनी मेहनत से किया. We still have a very male chauvinist kind of society. Sometimes our public behave very badly with these ladies. Even though she is a corporator, she is a mother, she is a housewife, she has to cook, she has to look after her children, she has to answer to her husband, and in the midst of this, she has to answer all the public also. There are women who are very powerful, who does the job even out of all these challenges. This is how the society also changes. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ವುಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಏನಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಹೆಂಡತಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಮಗಳೇ ಆಗಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. हम लोग का एक में लिखा है सेक्शन 14 में सैलरी नहीं ले सकता और रिम्यूनरेशन हम लोग का है नहीं. डेफिनेटली सभी का एक सेकेंडरी सोर्स है, बिकॉज खाली काउंसलर होके आप कैसे अपना घर चलाएंगे. आप सोचिए, व्हेन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ತಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲಸನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಮನೇಲೊಂದು ಕಾಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಅವಳದು ರೋಲು. ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. So our policy research shows that when women become city leaders, so they tend to prioritize more on needs of people in terms of water supply, sanitation, and studies also shows that when women become city leaders, cities tend to be far more inclusive and democratic as well. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ತಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಐತೆ ನೋಡ, ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಐತೆ ನೋಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕತ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಗಂಡು ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಏನೇನಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮ್ಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. The 2014 Supreme Court verdict, which recognized transgenders as a third gender, has given immense opportunity now for transgender communities to come up and play a significant role in city politics. Our interactions with some of the councillors show that they are very keen to not place any importance on their identity and rather focus more on the development of their ward and their people. Because India's cities typically do not have formal platforms for citizen participation such as ward committees and area sabhas, the interactions of councillors with citizens are largely through informal means such as WhatsApps or perhaps through their homes also, because not all councillors would have the office infrastructure facilities, so most of the time they would have to take up these meetings and engagements most likely in their homes. आज हर किसी के पास फ़ोन है और कोई इतनी सी बात होगी तो हमारा फ़ोन बजता रहता है. टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें मदद तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम भी है. मैं सोशल मीडिया में आई एम ज़ीरो. मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप पे इसलिए कि लोग अगर गटर वगैरह बहता है तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजते, तो ऑन द स्पॉट मेरा काम हो जाता है. और सब चीज़ में आई एम ज़ीरो. मुझे सीखना ही चाहिए बिकॉज ये ज़रूरत है. फंड्स के बारे में मतलब क्या करना है वो सब मुझे मालूमात नहीं. थोड़ी बहुत प्रजा ने हमको बताया, जो बहुत था मेजॉरिटी मेरे हस्बैंड से पता चला, तो धीरे धीरे सीखते गए. अभी भी मुझे पूरी नॉलेज नहीं है. हम लोग का पूर्ण निगम का जितना पैसा हम लोग का सोर्स से इनकम होता है, वो फुल सोर्स का पैसा से शायद हमको म्यूनसिपैलिटी चलना ही मुश्किल है. कि खाली एक काउंसलर अपने फंड से करा देगा तो इट इज़ नथिंग एट ऑल. तो मतलब फिर हम 5 साल में सिर्फ 10 ही सड़कें बना सकते हैं.
एक्चुअली काउंसिलर को ट्रेनिंग देना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए आप IAS का होता है, IPS का होता है, ACS हम लोग का जितना है, एडवोकेट का भी होता है। तो सबको ट्रेनिंग का सिस्टम जब है तो हम लोग को भी ट्रेनिंग देने का सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। ಬಹುಶಃ ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. जीतने के बाद जब हम आते हैं कम से कम 1 महीना 2 महीना हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलना चाहिए, सो दैट हम सब जो हैं हम एक ही विचारधारा पे चलें. A proper training program, a sharing of knowledge, sharing of experiences, sharing of models should be there between the cities. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. We have received several insights from the councillors themselves, the different aspects we need to take care even while delivering such a councillor program. We have also heard the voices of urban thought leaders, and both of these stakeholders speak the same. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆ, KMC ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. हमारा है नगर निगम का अधिनियम 2003 का, लेकिन ये है कि वो भी इतनी शुद्ध हिंदी में है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे समझ पाता भी होगा या पढ़ पाता होगा. BMC इतना वास्ट है ना कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी में निकाल दूँ तो मैं सीख नहीं पाऊँगी. तो अभी भी मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अभी भी. पहली बात तो फंड्स का किस तरीके से उसको हासिल करना है, किस तरीके से यूज़ करना है. सेकेंडली कॉरपोरेशन में इश्यूज़ कैसा उठाना है, कौन कौन से इश्यूज़ उठाना है, कब उठाना है, कौन सा एक्ट आपको यूज़ करना है. नए या जूने सब कॉरपोरेटर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी. किस तरीके से बात करना है, जैसा अभी हमको इतना अच्छे से बात करने नहीं आता है, किस तरीके से हमारी बात मनवाना है, किस तरीके से काम में स्पीड कराना है. मैं सोशल मीडिया में एकदम ज़ीरो, उसकी भी ट्रेनिंग ज़रूरी है. आप खाली ट्रेनिंग दोगे तो कोई नहीं आएगा, ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी. बेसिकली उसमें सबसे पहले तो हमें होना चाहिए कि हाउ टू डील विद पीपल. Some kind of professional training should also be there. How to manage your time, how to face criticism, how to turn obstacles into opportunities. So these types of training should also be there. जनाग्रह जो कोशिश कर रहा है तो म्यूनिसिपैलिटी का काउंसिलर को ट्रेनिंग लेके आगमेंट करने के लिए और बहुत अच्छा माने तरीका सोचा है, क्योंकि हम लोग को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है. We want to create a program that caters to the needs of the councillors from the perspective of citizens as well as their own perspective. If a city is holding elections for the city council and a new bunch of councillors are going to come in, can we work with them at that point of time and maintain a working relationship with them, perhaps over a period of time, and inspire thoughts in them, action in them, give them best practices from across the country and perhaps even the globe so that they can work towards that. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, और प्रॉब्लम्स एक टाइम पे ऐसी हो गई हैं कि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू ब्रेक. Prime Minister has talked about climate change and what India will do. We want to communicate that to the councillors, and how does that kind of a global crisis can be averted with local action. And as the saying goes, leadership is not something that is given, it is taken. You may have limited scope of work, you may have limited powers, you have very little financial powers, and yet people voted for you. You are accountable to them. How do you make that count? That's what we want to do in this program. There's a crying need for an intervention that could deliver a systematic leadership development program for councillors in India's cities. And let's not forget that close to 50% of India's councillors are women. If we empower close to 50,000 of these women leaders, we will see transformation in our own lifetime in India's cities. Janaagraha is committed to participatory democracy in India's cities. We believe it is very important to empower and enable elected councillors, ward level officials, and communities. We cannot do this alone. We really look forward to working together with partners who will co-travel with us in this journey of transformation.